Hi everyone, welcome to the season 3 of friction. Today we are going to start from the types of friction. So, friction can be rolling friction or sliding friction. Let me tell you. Wait, let me see any slide is there. Okay. So we have learned friction is the force that opposes the relative motion between two surfaces. So when you start pushing a heavy box, it moves instantly or does not move. It does not move. It moves instantly. No, it takes some time. It takes some time. Right. So even after applying force, the box may not move. Force apply करे तभी भी box may not move. So in such a case, the friction of force is acting between the substance. Let me see. जब move नहीं कर रहा है तब क्या friction काम कर रहा है? Obviously. This is not a static friction. We are going to learn about it with scene. Now, when we push the box initially, the force is balanced with the force of आप 10 न्यूटन दे रहे हो. Okay, you are giving 10 Newton force. The body surface means friction is also giving 10 Newton. The 10 Newton की कैपेबिलिटी है. ओके, उसके ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं देगा. अब 9 न्यूटन दे रहा है तब वो 10 न्यूटन दे रहा है. 10 न्यूटन दे रहा है तब भी वो 10 न्यूटन, इसलिए मूव नहीं कर रहा है. अब जब 5 न्यूटन दे रहा हो तब भी मूव नहीं कर रहा है. करेक्ट. पर जब आप 11 न्यूटन होगा तब वो मूव करेगा. पर तब भी तो फ्रिक्शन अप्लाई है ना. ये जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है जब आप पहला मूव दे रहे हो 10 न्यूटन दे रहे हो, तब ये भी तो 10 न्यूटन दे रहा है जो बैलेंस कर रहा है. The force of friction is balancing the force of you. The force of friction is a reason due to which the box that does not start move instantly. Instantly इसलिए वो move नहीं किया. Instantly इसलिए वो move नहीं किया क्योंकि that is balancing. Thus, the force of friction between the two surfaces in contact when the objects are stationary is called static friction. ये objects are stationary. So they mean standing, rest position में है. That time, the force of friction that is applied or that is applied, yes, when objects are in stationary means rest condition, that is known as a static. Which friction? Static. Now, static friction is called self-adjusting because as you increase the applied force, the opposite friction also increases. आप 10 दे रहे हो वो भी 10 कर ले, मीन्स आप 5 दे रहे हो तो वो भी 5 देगा. आप 6 दे रहे हो तो वो भी 6 देगा. 7 दे रहे हो वो भी 7 देगा. 8 दे रहे हो वो भी 8 देगा. 9 दे रहे हो वो भी 9 देगा. ठीक है. पर एक टाइम के बाद तो बॉक्स मूव करेगा. सो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन है और ये आपका है. So when the maximum value static is reached, after which the body will finally start to slide. The maximum value of static friction is also called a limiting friction, as it limits the motion up to some extent. तो वो मोशन को लिमिट कर रहा है. ये जो देखिए, अब जब 11 न्यूटन है तब बॉक्स 10 न्यूटन दे रहा है. फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही दे रहा है. तो जो ये 10 न्यूटन है ये क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये सब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट ही है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसके बाद वो मूव करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारा वैल्यू फ्रिक्शन का वैल्यू से ज्यादा है. फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक कैपेबल है पर हम कितना न्यूटन तक कैपेबल है? 11 न्यूटन. हम कितना तक कैपेबल है? 11 न्यूटन. Right. So when last part that is a 10 Newton is applied, that is the limiting friction because after that the friction is also not able to apply the force. Then our force is greater, that's why the box starts moving. So the maximum value of static friction is last, after which the box will be moving.
Okay, it's called limiting frictions. Also, you can say the limiting friction is that friction that is the interconnection of the static friction and the moving friction. That is a kinetic friction. Okay, understood. When standing, the friction force applied, that is called static friction. Last part of static friction is called limiting friction. That should be clear. Okay. Static friction is the measure of the force required to overcome the friction at instant and starts moving from rest. तो रेस से सब कोई मूविंग करने के लिए चाह रहा है, इसके बीच जो फ्रिक्शन है उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नहीं कि रेस्ट के समय नहीं, रेस्ट के जब कोई मूविंग के लिए फोर्स दे रहा है, फोर्स जब अप्लाई कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है तब उसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप इट इज क्लियर। चलो, सो लॉट ऑफ यूज इट टाइटन बोल्ट। If it's too loose, it may shake and loose and fall down. But if properly tightened, there is strong static friction. ये जो strongly आप लोग बोल दे रहे हो वो आप open नहीं कर सकते without a screwdriver because static friction is working because you are giving force. The force is also applying the same force. समझ में आया? Now when you are putting this, the revision prevent object from sliding. ये stone यहाँ पर लुक गया क्यों? ये फ्रिक्शन है ना। आप ये सुने हो ना कि केदारनाथ के पीछे, केदारनाथ के पीछे एक स्टोन आकर रुक गया था जब बारिश चल रहा था। क्यों हो गया? वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए रुक गया। वो गया, इसका मोशन स्लो हो गया और वो 10 न्यूटन ही दे रहा है फोर्स, उसका जब स्लो हो जा रहा है तब का 9 न्यूटन हो गया, तब उसका स्टॉप कर दिया। ओके, so have you observed that pushing a sliding object to keep it in motion is pushing is easier than pushing an object initially at rest? जो रेस्ट में है उसे पुश करना इजी है या जो मूविंग है उसे इजी करना है? यस, या बिकॉज जो मूव कर रहा है उसको मूव करना इजी है। राइट, अगर आपने एक स्विंग खेला होगा तो आपके माता पिता आपको पीछे से धकेल रहा होगा। दैट टाइम फर्स्ट व्हेन they are starting to swing you, that time they have to give a lot of force. After you are moving, then धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। So understand? Yes. Okay. So when we initially start pushing an object at rest, the irregularities are locked and more force is required. वो तो लॉक होके बैठा है, irregularities लॉक होके बैठा है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जो irregularities वो लॉक होके बैठा है तो उससे हमें तोड़ना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। पर जब सो स्लाइड कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो वो लॉक होने के लिए टाइम ही नहीं पा रहा है। it does not get enough time to get locked with the contact force क्योंकि वो मूव कर रहा है, इसलिए हमें लेस फोर्स देना पड़ रहा है। अगर वो पहले से रेट में है तो वो पूरा कांटेक्ट रखे इसलिए ज्यादा फोर्स लगेगा, और वो मूविंग कर रहा है तो वो टाइम ही नहीं पा रहा उससे कांटेक्ट करने के लिए क्योंकि वो आगे चल जा रहा है, तो तब इसलिए वो इजी है। अंडरस्टूड? If you don't understand one concept, see that concept twice, thrice. I have told you. Yes, many slides are there, so we have to do it fast, or else we have to cover in another session. Okay, I don't want that because I thought that in the previous session only I will complete, or it become 30 minutes because you are not understanding. So this session should not be that much. And when the objects are moving, the value of the friction decreases. That friction is called the, जब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप समझ में आ रहे हो? कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एडहेशन नहीं हो पा रहा है, गैप में फंस नहीं जा रहा है, दैट टाइम फ्रिक्शन इज लेस।
फ्रिक्शन बिकमिंग लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये मूविंग हो रहा है, इस जब मूविंग हो रहा है जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो लेस होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टैंडिंग है। ओके, ये मूविंग हुआ, जो मूव हो रहा है, when objects are moving and the friction is applied, that friction is known as the kinetic friction. That is less than the what? Less than the static friction. Kinetic friction can be two types, sliding and rolling. स्लाइडिंग मतलब ये ऐसा है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है। और रोलिंग मतलब ऐसा है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे रोल कर रहा है, सर्कल एंड सर्कल, ऐसे व्हील करते हैं। ऐसे when you are pushing a box, that time it is sliding. Yes, actually I am not familiar with the board and whiteboard to teach. That's why I'm teaching in the PowerPoint only. That's better for you to understand. Okay, देखिए, सो फ्रिक्शन ऐसा होता है। स्टैटिक, स्टैटिक में लिख देता मीन्स स्टैंडिंग। जरा ज्यादा मोटा हो गया, वेट कीजिए तो थोड़ा। काइनेटिक मीन्स मतलब मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटेड फ्रिक्शन। Sliding friction means sliding over an object, and rolling friction means going circle and circle, round and round. ये क्या है, ये क्या है, सॉरी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप बोलिए कौन सा ज्यादा है, स्टैटिक और काइनेटिक। जो काइनेटिक बोला वो भूल है, स्टैटिक इज द राइट आंसर। मेनी डू रॉन्ग बिकॉज ये स्टैंडिंग है तो लेस फ्रिक्शन है, ये मूव हो रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। स्टैटिक में ज्यादा लगता है फ्रिक्शन, इसमें लेस फ्रिक्शन लगता है। ओके, ना और एक थिंग आप बोल रहे हैं, इट इज इजियर टू पुश द बॉक्स ऑन हिल। आप देखोगे कि कोई थिंग है ऐसा, सी दिस, इसको बड़ी थिंग है, ये इजीली मूव हो रहा है, देख पा रहे हैं आप कैसे मूव हो रहा है। और ऐसे ये मूव होगा तो ये बात ज्यादा फोर्स लग रहा है मेरा। तो व्हील के साथ मूव करने में क्या इजी है, बोल रहे हैं ना, वी कैन मूव इजीली विद द हेल्प ऑफ व्हील। व्हाई, माय क्वेश्चन इज व्हाई, right? You will be having this question only, why it is easier। so देखिए, when one body is rolling over the other body, the interlockings becomes less, the interlockings becomes less, due to which friction is reduced as compared to sliding। ओके, देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। नाउ सी, ओके, मे बी this is your box, or let me point out this to you like this. This is your rolling, so let me point out this to you. Which will happen more friction, tell me, this one or this one? See, so much less. If you stack also less, so much more. So I have told you, more irregularities, more friction. Simple concept, more irregularities, more friction, more irregularities, more friction. Okay,
मोर इंटरलॉकिंग मोर फ्रिक्शन, यहाँ पर लेस इंटरलॉकिंग, क्योंकि इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, क्या इतना सा एरिया टच हो रहा है ग्राउंड से, और इसका एरिया देखो कितना सा टच हो रहा है। ज्यादा एरिया टच होगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, ज्यादा इरेगुलरिटीज बढ़ जाएगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। एरिया इरेगुलरिटीज फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, एक नया चीज सीख लिया। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग लेस है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। इसलिए आपका ट्रॉली बैग में रोलिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, और रोलिंग फ्रिक्शन अगर पूछे तो आप बोलना स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, राइट, बिकॉज इट इज मोर, contact area is more. So when one body rolls over other, that is called rolling friction. Rolling reduce friction than sliding. अगर आप स्लाइडिंग कुछ चीज कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, उसका अगर आप रोलिंग मोड में ले आओगे तो वो द फ्रिक्शन अप्लाइड विल बी लेस। अगर आप उसको रोलिंग मोड में ले आओगे तो द फ्रिक्शन अप्लाइड विल बी लेस। इसलिए ट्रॉली बैग में व्हील्स होता है, सिंपल। ना आपने देखा कि हमने रिड्यूस कर दिया फ्रिक्शन, राइट, बाय यूजिंग व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। सो हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं क्या, किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। देखिए यहाँ पर देखिए, आई एम राइटिंग विद स्टाइलस गाइस, बट यू विल, व्हाई आई विल शो दैट। एक तो जा, हाँ, सो वी कैन सी द एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। ये देखिए बॉल बियरिंग्स, इसको रिड्यूस किया जा, इसके यूज किया जाता है जिससे फ्रिक्शन लेस हो। क्योंकि अगर टू ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं और वो खूब ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हीट ज्यादा होगा, डैमेज होगा। बट दिस बॉल बियरिंग विल रोटेट, दैट मीन्स द फ्रिक्शन विल बी लेस, राइट, बिकॉज रोलिंग तो, correct, it is used in fan, it is used in machines like cars, that is ball bearings. Ask your father mother, they know it very well. Okay, that's why train have the wheels, that's why the skatings have the wheels, to move faster and reduce the wastage of electricity। देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बता दिया आज। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये मैंने बता दिया था, राइट। सो काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन का भी दो पार्ट होता है, उसमें से रोलिंग सबसे कम है, उसके बाद स्लाइडिंग इसलिए आता है, उसके बाद स्टैटिक आता है। ओके, so as we increase force, static friction will also increase। ये अप्लाइड फोर्स ये है ना, ये सामरी है आपका। देखिए ग्राफ से देखेंगे आप, अब हम क्या किससे देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, ग्राफ तो देखेंगे ही, पहले ये देख लीजिए, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ टू ऑब्जर्व। ओके, सो एज वी इंक्रीज द फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज, आई बोल दिया मैंने, 5 न्यूटन है तो वही 5 न्यूटन कर लेगा, सेल्फ एडजस्टिंग कर लेगा। 5 न्यूटन है तो वो भी 5 न्यूटन कर लेगा, करेक्ट। नाउ फाइनली इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटेटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटेटिंग फ्रिक्शन। exceeding which the objects are moves, exceeding which means exceeding the limited friction will make the object move. Once the object is in motion, the value will drop and will be becoming kinetic friction, and that time it is called as kinetic friction. When it's moving, it's called as kinetic friction, and the value will drop. See, static friction is not moving. Okay, it's a limited friction, maximum value of static friction. Then when it's moving,
that time it become less and way like this. Correct? So lot of studies we have done. Let's go to quiz. Wow. Okay. Tell me what is A? Eliminating friction. In static friction, PQ is measured to be 50 Newton. Static friction measured to be 50 Newton. Then the sliding friction between the surface is most likely to be that. में क्या वाला फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसके बाद सो यहाँ पर बोलिए कौन सा होगा इजी 40 राइट 50 से कम है राइट इट इज इजियर it is easier to push a box placed on a wheel cart than to push it by a sliding on ground because sliding friction is greater than a rolling friction. Simple, right? So for limiting friction, two of surfaces of 100 Newton. Two surface क्या है? 100 Newton. The static nation will be 40 Newton for an applied force of 50 Newton. तो लिमिटेटिंग फोर्स क्या है 100 न्यूटन है स्टैटिक फोर्स क्या होगा 40 न्यूटन होगा अगर अप्लाइड होगा तो फॉर 50 न्यूटन 100 न्यूटन में वो मूव करेगा और 50 न्यूटन में हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो क्या मूव करेगा क्या और 40 न्यूटन बोल रहा है तो ये फॉल्स है तो करेक्ट राइट बिकॉज ये 40 न्यूटन होगा तो हमारा भी तो 40 न्यूटन होगा ना बोला सेल्फ एग्जॉस्टिंग so say that will be same this is given for you to for confusion this is the main part 40 newton is the static friction is 40 newton understanding Aja. So static friction is telling us the 40 newton then our force will be also 40 newton it will be not 50 newton so अगर ये 50 newton होगा तो ये भी 50 newton होगा right correct or not और देखने का भी जरूरत नहीं है ओके सेकेंड ऑप्शन नहीं क्योंकि एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा ही होगा नाउ लास्ट थिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड जो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन द फ्रिक्शन applied by fluids फ्लूइड्स दो कर तरह का होता है लिक्विड और गैस ये आपने पढ़ा है लिक्विड और गैस राइट so when you are cycling in a windy day you have feel the resistance while boating you have feel the resistance while these resistance are there because they exert friction that's why this we are giving the resistance right so that is the thing fluid exert pressure this is clear or else we will not feel any resistance right so the magnitude of friction actually depends on the nature of the fluid ये एक point है magnitude means how much friction will be applied that magnitude will depend on the nature of the fluid let us discuss a simple activity to understand this देखते हैं क्या activity है in which medium will the coin reach the bottom first air या water tell me this is very easy इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ से यहाँ पर ही तो यार आपने देख लिया वाटर आपको करने के देखना है किसमें यार में ज्यादा ये डेंसिटी ज्यादा है सो फ्रिक्शन विल बी मोर डेंसिटी इसको ये डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विस्कोसिटी क्या बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं सी पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड that's why less friction particles are more closely packed that's why more friction ये मैंने बताया था previous class में I guess so so when they will move that time less friction that's why it's moving faster it's more friction that's why it's moving less so the fluid friction depends on the nature of the fluid
Simple. Fluid friction depends on the nature of the fluid. Now, when we run, the resistance of air towards motion is called as air drag. यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस हो रहा है, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे, एयर का फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग ड्रैग। क्या बोले हम लोग, एयर का फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एयर ड्रैग। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ड्रैग ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड इज मोर देन द फास्ट फ्लोइंग बॉडी। ये क्यों हमें फील हो रहा है, क्योंकि हमारा से ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, drag is thus the frictional force acting on a solid when it moves to a fluid. Every part of the object experiences this drag force. Sub part, not only this part, not only this part, every part will be free. The study of movement of air around objects is called aerodynamics, that you may learn in your future. So, just learn it. If you take aerodynamics in your honors, that time you can learn it. Okay. The science of studying movement of air around object, that is called as aerodynamics. Okay. हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स अगेन बता दे रहे, थिंग से सुन लीजिए। फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स व्हाट, फ्रिक्शन अप्लाइड बाय फ्लूइड, मीन्स लिक्विड और गैस। अगर उसका एयर करेंगे, एयर विल अप्लाई, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रैग। अगर मेरा क्वेश्चन है, एयरप्लेन ऐसा सेफ क्यों है, एयरप्लेन ऐसा सेफ क्यों है, यहाँ पर रेनिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, इट्स रेनिंग वेरी मच। ओके, so airplanes are shaped like this, why, can you tell me why airplanes are shaped like this? To reduce the drag, to reduce the drag, that is by streamlining, this is called as streamlining, by streamlining our object we can reduce the drag। so drag इस साइड में हो रहा है, ट्रांसमिस हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, वेट नीचे है, लिफ्ट ऊपर में करना चाह रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये सब बैलेंस्ड हो गया, तो दिस यू नो राइट। Now such shape is called a streamlined shape. A streamlined body lowers the friction drag between a fluid like air and water and an object moving through the fluid. So a streamlined body will lower the drag. Okay. See. So any other shape would increase the drag, but the streamlined shape will decrease. See, a round shape. See this. The round shape, this is moderate. Flat will experience lot of drag. Can you see? And airplane will be the minimum, right? So we can also see that streamlining is the best part. Streamlining is the best part. When we streamline, that's why you see all the animals are streamlined who live in air and water. See, they are flying in a streamline, so their body are shaped in a streamlined manner, so they will experience minimum drag. So we have also utilized the concept and design similarity in streamline. See, we have created the submarines, we have created the aircraft all in the streamline. Understood? Check. What will be less by streamlining? Energy loss. Correct. If you learn of swimming and diving, you must know that there is a proper way to dive in water. In case a person dives flatly, they may get hurt, they may have to dive in like this straight position. It's important that they have to right diving position to reduce the fluid friction while entering, because a person should form a streamline position, they should form a streamline position to reduce the friction। अगर ऐसे हम लोग गिर गए तो ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, बॉडी ऐसा फ्लैट स्टेप हो गया तो मोर फ्रिक्शन लगेगा, मोर हार्ड हो जाएगा। पर हम लोग अगर ऐसे स्ट्रीमलाइन में
वी डाइव देन इट विल नॉट। तो फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड अप्लाई करते हैं हम लोग, इसे कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन कर देंगे बॉडी को। इफ वी मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन देन वी कैन करेक्ट दिस। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, अगर मोर डेंसिटी है, जैसे हमने देखा यार्न का लेस है और वाटर का मोर है, तो उसका ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा वाटर का। सो नेचर ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इतना कम स्पीड होगा उतना ज्यादा कम स्पीड होगा। और स्टेप शेप, शेप क्या है, स्ट्रीमलाइन मोस्ट लेस, फ्लैट विल मोर मोस्ट फ्रिक्शन। सो स्ट्रीमलाइन लेस फ्रिक्शन, फ्लैट सरफेस मोर फ्रिक्शन। नेचर ऑफ द फ्लूइड, अगर डेंस हुआ तो ज्यादा फ्रिक्शन, वेलोसिटी मोर स्पीड मोर फ्रिक्शन। सो nature of the fluid, velocity and shape are direct proportional to friction. Simple. Match the following: static friction, sliding friction, pulling friction, fluid friction. Very good. Chalo. Explain why objects in moving shapes have streamline shape. When a body moves through a fluid, they it experiences an opposing force. This opposing force, when they move the fluid, is known as the drag or fluid. Fluid friction depends on the shape of the body. By giving objects a streamlined shape, the force of friction can be minimized. Streamlined shape देंगे the force of friction can be minimized. Thus, streamlined shapes of the object helps in the reducing the amount of friction, and we can move through the fluid very easily. So these fractured, and that's all for these things. Okay, that's all for these things. Submarines are designed in streamline same because to decrease the friction. What would happen if we drop a paper and pen from the height in the same way? Which will reach first? Weight ज्यादा जिसका, पेन का ज्यादा weight है. Correct. The shape of the pen is more streamlined than paper. वेट भी है, स्ट्रीमलाइन का भी एक फैक्टर है। ओके, व्हेन बोथ पेन एंड पेपर आर ड्रॉप टुगेदर द पेपर एक्सपीरियंस मोर, सॉरी नॉट पेन एंड पेंसिल, सॉरी पेपर, सॉरी पेपर देखिए इतना बड़ा है, ये फ्लैट है, और पेन है देखिए स्ट्रीमलाइन, इसका लेस फ्रिक्शन होगा, इसका मोर फ्रिक्शन होगा, यही तो बताया है। पेन इज मोर स्ट्रीमलाइंड देन दैट पेपर, पेपर will express more drag than the pen, that's why the speed of falling paper is reduced than the pen. Simple. An object moving in the water will experience more drag as object moving from air. Fluid friction depends on the nature of the fluid, ये तो true है, ये क्या है, ये भी true है। ये मैं बोला यार में लेस फ्रिक्शन होगा, वाटर में मोर फ्रिक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल इन वाटर आर क्लोजली पैक्ड देन इन एयर, इसमें लेस फ्रिक्शन एयर में, और वाटर में मोर फ्रिक्शन। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड, दैट इज ओके, एंड दैट्स व्हाई नेचर ऑफ फ्लूइड की वजह से ही तो ये हो रहा है, राइट, दैट्स व्हाई इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So let's summarize. The force of friction between the two surfaces in contact when the objects are in stationary is called the static friction. Okay, static friction is called a self-adjusting because as you increase the applied force, the opposing force will increase. The maximum value of static friction is called a limiting friction. The force of friction which acts between moving objects is called kinetic friction. Kinetic friction can be classified as sliding and rolling friction. Rolling friction has the least of all, whereas static friction has the maximum value. Liquids and gases are called fluid. Force of friction exerted by fluids when objects move are called fluid or drag. Factors affecting nature: ज़्यादा molecules है या less molecule, like water. Speed, ज़्यादा speed, ज़्यादा friction. Shape, streamline shape less, and flat shape more. Liquid exert more fluid friction than air. True. Forces of the giving and process of giving an object a particular shape to decrease friction
That is called the streamlining. When we are giving a particular shape to the object to decrease the friction, that is known as the streamline. Streamline means सीधा, सीधा. Okay, means a like straight, not flat. Okay, so that's all of the chapter. I hope you liked it. Next chapter is microorganism friend and foe. Just see the chapter after next week. I will upload that chapter. That's all for today. Meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Goodbye.